Today I'm gonna unbox the Audionic Solo X9. X9 है ना? Today I'm gonna unbox the Solo. Assalamu alaikum Blue Squad. Today I'm gonna unbox the Audionic Solo X9 and let's get to the unboxing. आउटर पोर्टेबल स्पीकर और ये ऑफिशियल साउंड पार्टनर पेशावर ज़ल्मी है इनके. दिस इज़ द बॉक्स ऑफ द स्पीकर. काफ़ी अच्छा मतलब बॉक्स है, लाइक गुड क्वालिटी. देखने में क्या पता इतनी गुड क्वालिटी ना लग रही हो, बट लाइक फील इज़ नाइस. ओके. Outdoor speaker have wireless Bluetooth. The Solo X9 portable speaker is capable of producing bass that even much larger speakers fail to deliver. The X9 delivers deep, rich lows paired with a highly dynamic sound range for the most sophisticated stereo listening experience possible. देख लेते हैं, वो भी रिव्यू भी आएगा. High quality audio, 4 hours play time, rechargeable battery. I think 4 hour play time है बैटरी का. Lightweight and portable, colorful lights, TF card, USB supported as well. और स्पेसिफिकेशन इसकी बिल्ट इन 3.7 वोल्ट का इसकी बैटरी है. 45 मिलीमीटर के 2 स्पीकर्स हैं. स्पीकर पावर 5 वॉट है. 1 आई एम रियली सॉरी गाइस, जस्ट टू टेल यू, दोनों स्पीकर 5 वॉट के हैं, नॉट एक स्पीकर. एंड साइज इज 188 मल्टीप्लाई बाई 82 मल्टीप्लाई बाई 80 मिलीमीटर. स्टैंड अलोन वेट है 530 ग्राम्स. लेट्स अनबॉक्स इट. आई थिंक ऐसे ओपन होता है. I'm gonna slide it out. Wow, nice. This is very good and clean. It looks very nice. So yeah, here's the speaker itself. ये plastic crystal type है and wow, okay, काफ़ी nice looking है. क्वालिटी वाइज हैवी है. 508 ग्राम्स जो है फील हो रहे हैं. दिस इज़ JBL कॉपीड. ये इनर जो लेफ्ट राइट 2 स्पीकर्स हैं, नाइस. एंड यहाँ पे पावर बटन, प्लस, मोड, माइनस एंड लाइट्स. एंड आई थिंक SD कार्ड एंड चार्जर वगैरह यहाँ पे. ओके, इसको साइड पे रखते हैं. लेट्स सी अंदर कुछ हो रहा है कि नहीं. ओके. Audionic का first time in Pakistan E-warranty card. Then this is the charging cable and an aux. इसमें यही सब कुछ था. speaker, Audionic E-warranty card, aux, cable, this box. That was it. So unboxing is done. Thank you so much for watching the video. I hope you liked it, and do comment down what should I do to improve my videos. See you in the next vlog. Allah Hafiz.